Good morning, students. As we have learned about acid and bases, now let's start with uses of acids and bases. There are so many acids, and acids are used as like mineral acid. They are used in medicines. HNO3 means nitric acid. It is used to clean jewelry. H2SO4 sulfuric acid. It is used in batteries. बैटरीज में जो आप कार में लगाते हैं इन्वर्टर जनरेटर में जो भी बैटरीज होती है उसमें जो लिक्विड फॉर्म होता है लिक्विड भरा होता है दैट इज H2SO4. एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी बोल सकते हैं. एसिटिक एसिड इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. उसको हम फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ करते हैं. लाइक जब हम पिकल्स वगैरह डालते हैं तो उसमें हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं. एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ यूज एज सैनिटरी क्लीनिंग में. जब आप टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करते हैं उनको फ्लोर की जो क्लीनिंग करती है उसमें जो हम एसिड यूज़ करते हैं दैट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ बेसिस like NaOH sodium hydroxide it is used in soap industry. सोप इंडस्ट्री में जैसे हमको जब सोप्स बनाने होते हैं वी वांट टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट्स इसके अंदर हम NaOH यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज टू रिमूव सॉइल एसिडिटी. सॉइल के अंदर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं ताकि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाए और हमारे जो क्रॉप्स है वो ईजीली ग्रो कर सकें. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज़ यूज इन सोडा. जो आप सोडा पीते हैं एफोरेसेंस के लिए. एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑन करते हैं तो उसमें से जो एकदम से फ्यूम्स निकलती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इट इज़ यूज इन टूथपेस्ट डिटर्जेंट्स. इन सब के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं. So these all are the uses of acids and bases. Now come to salts. What are salts? When an acid and a base react with each other, it will form salt and water, and this type of reaction is known as neutralization reaction. As we have already learned in the sixth chapter, what do you mean by neutralization reaction? The reaction in which acid and base reacts and they form salt. There are so many salts. तो उसका सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल दैट इज़ NaCl विच इज़ यूज्ड इन किचन. जो आप किचन में नमक यूज़ करते हो दैट इज़ NaCl सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. कैल्शियम कार्बोनेट इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मेकिंग. जो हमारे मार्बल्स वगैरह होते हैं दैट इज़ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एलम मीन्स फिटकरी. इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. जो गंदा वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए वी यूज एलम. So this all are about what is salt and the uses of salt. Next come to pH. What do you mean by pH? P stands for potence and H stands for hydrogen ion. pH is like the your ruler scale. जो आप स्केल यूज़ करते हैं उसी टाइप से एक स्केल होता है. इट मे बी अ पेपर. तो pH scale is used to measure the strength of acids and base. Strength means कोई सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड कितना एसिड है या वो कितना बेस है. और इट मे बी अ न्यूट्रल कंपाउंड. वो न्यूट्रल है. अगर इसको हमें मेज़र करना है दैन वी विल यूज़ pH स्केल. तो हम उस समय हम pH स्केल का यूज़ करते हैं. pH स्केल की जो रेंज होती है इट इज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. 0 to 14 में यू कैन सी इफ़ द scale ranges between 0 to 7 that means the substance is acidic. If the substance acidity is 6 means it is most acidic in nature. If the substance have the pH scale 7 means that is neutral, like water is neutral, blood is neutral. If the compound have the pH scale at a greater than 7 and less than 14 means in between the 7 and 14 means the compound is basic in nature. The compound having the 14 pH is the most basic in nature. This is all about what you mean by pH scale. It is the scale which is used to measure the strength of acids and bases. It ranges between 0 to 14. Acid ranges between 0 to 6 या 0 to 7, less than 7. 7 पे neutral, and if the substance having greater than 7 and in between 14, 7 to 14, it is basic in nature. Now we'll read about some important compounds that will be used in our daily life. Like the first we'll start with NaOH. NaOH means sodium hydroxide. The common name of sodium hydroxide is caustic soda.
It is prepared by the electrolysis of NaCl. We have already learned what you mean by electrolysis. Electrolysis means the decomposition of any compound when the electricity is passed. जब electricity passed होती है, जब किसी भी compound का अगर decomposition होता है, decomposition means breakdown होता है in the water, then it is said to be a electrolysis decomposition reaction. So NaOH is obtained by the electrolysis of NaCl means sodium chloride. NaCl means sodium chloride. You can see the reaction when two molecules of NaCl is dissolved in two molecules of water or in water, then it dissociates and it forms two molecules of NaOH. NaOH means sodium hydroxide plus chlorine gas and plus hydrogen gas. So NaCl is obtained by the electrolysis of NaCl. Now the general properties of NaOH is it is white soapy solid substance. Soapy means चिकना, जैसे आप उसको हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा, तो it is white soapy solid substance. Its melting point is 591 Kelvin. Melting points means ऐसा point at the fixed point at which the solid starts to melt. तो उसका जो melting point है is 591 Kelvin. It is soluble in water and it is strong base. इसका जो pH होता है that is 14. इसका pH 14 होता है, so it is a strong base and it is completely soluble in water. So this is all about what you mean, what is NaOH, how does it prepare, and what are the general properties. Now what are the uses of NaOH? It is used in soap and silk industry. Silk is the silky substance where चिकना होता है, so that it is used in silk industries. In the purification of petroleum as a laboratory reagent in chemical reaction, it is used as a base in the manufacturing of fats and oil, and it is used in the metallurgy of bauxite. Bauxite is a type of ore. जब हम उसमें से metals को ओर को बॉक्साइट जो ओर होती है, जब हम उसकी मेटलर्जी करते हैं मीन्स ओर के अंदर से जब हम मेटल को निकालते हैं, एट दैट टाइम NaOH इज यूज. सो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ NaOH. Our next important compound is NaCl means sodium chloride. Its common name is common salt which we will use in our kitchen. किचन के अंदर जो हम नमक यूज़ करते हैं that is NaCl. The pH of NaCl is 7, so it is neutral in nature. वो ना acid होता है ना base होता है, it is neutral in nature. How does it prepare? It is obtained from sea in a raw form and then prepared in a factories. आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक सी मतलब सीज होती है, सी के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है, उस पूरे एरिया के अंदर जो सॉल्ट होता है, हम बोलते हैं ना कि जो समुद्र का पानी होता है दैट इज़ सॉल्टी इन नेचर. तो हम एक एरिया प्रिपेयर कर लेते हैं, उस एरिया के अंदर हम जो वाटर होता है उसको हम पूरा ड्राई होने देते हैं. आफ्टर ड्राइंग जब पूरा वाटर एवोपरेट्स हो जाता है, एवोपरेट होने के बाद हमको उसमें से इजीली सॉल्ट मिल जाता है, बट that salt isn't in raw form or isn't in impure form. So after collecting that impure form, हम उसको फैक्ट्रीज में भेजते हैं और इन फैक्ट्रीज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर फॉर्म एंड उसके बाद हमारे पास सप्लाई होता है. तो इट इज़ द वे इन विच सॉल्ट इज प्रिपेयर. The general properties of salt are it is white in color, it is crystalline white. मतलब crystalline मतलब उसके जो सब्सटेंस होते हैं, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. इट इज़ सॉलिड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है. इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट आयोनाइज कम्प्लीटली. Ionize completely means when it dissolves in water, it dissociates and it gives Na plus and Cl minus ions in water. Now, what are the uses of common salt? Common salt is generally used in food. It is used as preservatives. It is used to freeze a mixture. Means जब आपने देखा होगा आप लोग कुल्फ़ी वगैरह खाते थे, तो जो कुल्फ़ी होती है वो आपको थोड़ी सी खारी लगती है, सॉल्टी इन नेचर लगती है. वाई? बिकॉज टू फ्रीज द सब्सटेंस, टू फ्रीज द मिक्सचर, हम इसमें कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं. जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है उसका यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NaCl इन दैट मिक्सचर, आपको जो भी कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं या जो भी आइसक्रीम्स खाते हैं वो कैसे लगेगी आपको, इन सॉल्टी लगेगी एट द बिगनिंग के अंदर. इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH एंड ब्लीचिंग पाउडर. जब हम ब्लीचिंग पाउडर और NaOH को मैन्युफैक्चर करते हैं एट दैट टाइम NaCl भी यूज़ होता है.
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने NaCl का कैसे यूज़ किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ NaOH in our previous slides. Thank you.